गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पाठशाला में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम सब ने जाना कि हम एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते हैं, और मैंने ये भी बोला था कि लास्ट वीडियो में कि ग्रीटिंग पार्ट का कुछ लेफ़्ट ओवर लाइक कंटेंट है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, इंट्रोडक्शन कैसे दें किसी के सामने। हम अगर हम मीटिंग में जाते हैं या किसी नए लोगों से मिलते हैं या किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो हम इंट्रोड्यूस कैसे करें। इवन अगर आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ या किसी भी कॉलेज में जाओ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। वहाँ पे आपका लेक्चरर होगा या जो भी प्रिंसिपल टीचर जो भी होगा वो आपसे ये फॉर श्योर बोलता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ greeting, and also we will go ahead and continue with the part that would be like introduction, how to introduce yourself in a meeting or in an interview, right? So without wasting much of your time, let's begin. So last video में आप सभी लोगों ने जैसा कि जाना कि ग्रीटिंग्स के लिए मैंने रिकैप कर देता हूँ। ग्रीटिंग्स के लिए हमारे पास गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग होता है, और गुड नाइट फिर से आई जस्ट लाइक टू टेल यू वंस अगेन, गुड नाइट वी ओनली से when we are when we are going somewhere after meeting a person, right? Let's suppose I'm going to meet a person. I met a person at 7:30 in the evening and I'm just returning back, and I know that I'm not going to meet the same person on the same day. So that is when we call good night, or we can say good night. आपको हिंदी में बताता हूँ, अगर हम किसी से शाम को 4:30 बजे के बाद मिले या 5 या 6 जो भी, एक इसका कोई फिक्स शेड्यूल या टाइम नहीं होता, बट नॉर्मली हम लोगों ने मान रखा 4:30 या 5 बजे तक। सो इफ़ वी आर गोइंग टू मीट अ पर्सन, हम किसी से 4:30 या 5 बजे के बाद या 6 या 7 बजे किसी से मिलते हैं और हम उस जगह से वापस आ रहे हैं और आपको पता है कि उस दिन आप उस पर्सन से दोबारा नहीं मिलेंगे। सो व्हेन यू आर रिटर्निंग बैक, जब आप वापस आ रहे हो उस इंसान से मिलके या उस टीचर से मिलके या किसी से भी XYZ किसी से भी मिलके, तब आप गुड नाइट बोलते हैं, राइट? जैसे सिंपल सा चीज़ है कि इवन आप जब टेक्स्ट मैसेजेस करते हो, नाउअडेज व्हाट्सएप इज़ वेरी पॉपुलर। सो आप जब सोने जाते हो तब गुड नाइट बोलते हो। अगर आप 8 बजे ही सोने जा रहे हो तो आप गुड नाइट बोल दो। सो एग्जैक्टली द सेम थिंग, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो और वापस आ रहे हो, वो 8 बजे हो, 8:30 बजे, 9 बजे, सो यू कैन से गुड नाइट, देयर इज नो हार्म, राइट? नाउ लेट्स कम टू और कोई भी डाउट्स हो तो फील फ्री टू आस्क। आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट हो, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश बता रहा हूँ तो आपको, अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता है, आपके पास कोई भी डाउट हो, आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। फॉर श्योर मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आगे ही अभी आज के वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से अपना एक चैनल जो कि हम टेलीग्राम पे क्रिएट कर रहे हैं उसको भी शेयर करेंगे। उस पर कोई भी ज्वाइन कर सकता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जिसको बेसिक इंग्लिश क्लास करनी हो मैं रेगुलर क्लास भी करूँगा, और जिसको कोई भी डाउट्स हो या कोई भी इंटरव्यू देने जा रहा हो, सो आई श्योरली हेल्प वॉट एवर लाइक experience I do have. I'll share myself, I'll share my experience, and I'll for sure guide you how to get the things rolling up for you, right? So let's come to the lesson 2, that is how to introduce yourself in English. So introduction part is very important, and that's something you can say that is the first impression, and people often talk first impression is the last impression, right? So if for the first you can say 15 seconds or 30 seconds or 1 minute or 2 minutes, whatever impression you create on a person who is taking your interview or who is conducting your class, that is
very important. So how does introduction impact a person? इंट्रोडक्शन सामने वाले के ऊपर कैसा इम्पैक्ट, मतलब क्या इम्पैक्ट, लोग बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड दैट्स वेरी ट्रू. सो वो क्या इम्पैक्ट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल उससे सामने, बिकॉज आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, जो इंटरव्यू आपका लेता है ही ऑलरेडी हैज़ अ रिज्यूमे ऑफ योर्स. उसमें आपने सब मेंशन कर रखा होगा, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके विलेज का नाम, आपने क्या कर रखा है, क्या एजुकेशन ली है, सब कुछ ही हैज, यू हैव मेंशन ईच एंड एवरीथिंग. बट स्टिल व्हाई द इंटरव्यूअर आस्क यू टेल मी और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ? व्हाई? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट? वो क्यों पूछता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए? So the main, there are like 5 to 6 point what that interviewer or what a person who is conduct, or your class teacher or your new class people wants to know. Why the introduction part is being asked, and why people ask you the same question instead of having each and every thing about yourself on a piece of paper. Why? So I'll just tell you, first of all, with your introduction, when you will speak, the person sitting opposite to you knows about your attitude, your comm skill, and are you eligible, or you can say are you fit for the job for which you have been like aligned for the interview. And also you can say your confidence level, your etiquettes, your behavior. So these all things are judged. And again, if the person has a piece of paper, he cannot judge all these things by reading the things, right? So that's the only reason introduction, or you can say a person or interviewer asks you, tell me something about yourself, right? So it's very easy. Again, I repeat myself again and again, and I'll repeat again the same thing for you, that keep yourself very simple. Don't try to go very fancy, or don't try to, like, if you know, nowadays use a neutral accent. Even if you are sitting in a client meeting, the person is from US, UK, or any XYZ country, everyone knows a neutral accent. So try to use a neutral accent. Earlier, yes, there used to be a problem that if you're working for a US MNC, you have to use US accent. If you are working for UK MNC, you should have a UK accent. But now the things are gradually changing. Everyone knows all these like MNCs or all these projects from US, UK are being outsourced to India or other Asian countries. So people do understand the neutral accent, and they themselves say, people themselves say, your client they themselves mention, please use neutral accent. The reason why they are asking you to use a neutral accent, because whatever practice you do, or whatever you can say, try to modulate your tone or accent, you cannot be the same, you cannot get the same accent as a US person or a UK person. Yes, even me, I had worked for US clients, and I also already have worked for US clients. So yes, you can, by practice or by being in that same loop for couple of years, you can catch them, but you cannot be 100% the same as US person, right? I have experience, I can be 90% of them, but I cannot be this, I cannot use, or I cannot have the same accent what US person will be having or what UK person will be. So please and please, when you are, especially when you are sitting an interview, be very simple, very neutral while speaking English. And yes, try to form short sentences. Try to form short sentences. Do not go for like very long sentence where you yourself is not aware what you're talking about, right? So let's suppose if I'm taking your interview, I'll ask, okay, tell me something about yourself. So do not go
each and everything in just single line. Okay, my name is Gyanendra. I have completed my schooling from so and so school, and I have done my graduation in IT or XYZ, whatever you have done. Now, coming about my job experience, I have worked with Wipro as quality analyst. I have worked with IBM as team lead. Then I have worked with IOG Technical Services for so and so years. So these are all things that you can use step by step. So keep it very short sentence. And now when you come, and then introduction would also introduction would also have something about your family, right? Because nowadays if you're going for extremely, you can say, formal interviews, or if you're going for like MNCs, people nowadays suggest this, talking about family is not mandatory. But yes, make sure if you're going for an Indian company, if you're going for an interview in an Indian company, talking about family becomes, you can say, important, right? अब मैं कुछ चीज़ें आपको हिंदी में बताऊंगा. सेम इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले फिर से वही चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप अपने आप को बहुत सिंपल रखें, बहुत छोटे सेंटेंस यूज़ करें, सिंपल वर्ड्स यूज़ करें, कोई हाई फाई या ऐसा वर्ड्स नहीं कि ज़बरदस्ती आपने रट लिया है, कहीं पढ़ लिया है कि हाँ ये वर्ड यूज़ करना है तो यूज़ करूँगा चाहे जैसे. होता क्या है कि आपने मान लो वर्ड यूज़, कोई भी आपने ग्रामेटिकली या कहीं से पढ़ा डिक्शनरी में कि ये वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब फ्लो में बोलोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है गलत निकल जाएगा. सो इट्स बेटर टू यूज सिंपल वर्ड्स रादर देन यूजिंग एनी फैंसी वर्ड्स, राइट. सो ये सारी चीज़ें. बाकी दूसरी चीज़, हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे फोकस जो इंटरव्यूअर का इस पे होता है. जब इंट्रोडक्शन तो उसने पूछ लिया कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इसमें बहुत सारी चीज़ें, आप अपना नाम बताएं, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, फिर आपकी फैमिली में कौन है, आपके फादर क्या करते हैं और आपकी मदर क्या करती है. डोंट गो बियॉन्ड दैट, लाइक ग्रैंडफादर यहाँ से है, लाइक मामा मेरे ये करते हैं. नो, नॉट एट ऑल. ये भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, राइट. बट स्टिल इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर एन इंडियन कंपनी, वेदर इट्स गवर्नमेंट सेक्टर और इट्स प्राइवेट सेक्टर, येस डू टॉक बट नॉट दैट मच कि आप हर एक, मतलब भाई ये करता है, छोटा भाई ये करता है, छोटी बहन ये करती. नो, just be focused, your parents, your father, your mother, that's it, and how many siblings you have, that's it, nothing more than that, right. So this is all. The more you will talk, the more you will tell, keep it very simple, 2 or 3 minutes. The more you will talk, जो सामने वाला होगा ना उसके पास questions और बढ़ते जाएंगे. Because what happens, question वो कहीं से रट के नहीं लाता है, वो आप जितना बोलते जाओगे उसी में से वो आपसे नया नया चीज़ पूछने लगे. एंड अगेन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो पहली चीज़ कॉन्फिडेंट रहो. जो भी आप बोलोगे, बी कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर स्पीकिंग, डोंट फंबल, बी कॉन्फिडेंट एंड थोड़ा स्माइलिंग, और आपके वर्ड्स में थोड़ा मतलब आपके वर्ड्स थोड़ा एनर्जेटिक हो. अब ये नहीं कि गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज ज्ञानेंद्र, आई एम यू. So, ऐसा नहीं एक ही टोन में आप जाओगे, दिस वुड नॉट लीव अ गुड इंप्रेशन, राइट. बी एनर्जेटिक. वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. किस पे एम्फेसिस डालना है, जैसे आपने कहा गुड मॉर्निंग सर, सो दिस इज वेरी गुड इंप्रेशन. दैट मीन्स सामने वाला पहले ही जज करेगा, यस दिस गाय हैज, यस ये एनर्जेटिक है. बिकॉज वॉट हैपन्स, जो इंटरव्यू लेता है या जहाँ पे भी आप मीटिंग में जा रहे हो, वो सुबह से शाम तक न जाने कितने लोगों का रिज्यूम पढ़ चुका होगा, कितने लोगों से मिल चुका होगा. सो व्हाट्स समथिंग डिफरेंट इन यू, यू हैव टू लीव ए इम्प्रेशन, यू हैव टू बी समथिंग डिफरेंट, राइट. अब समथिंग डिफरेंट का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बकते जाओगे. दिस डजंट मीन दैट यू टॉक एनीथिंग, मीन्स यू हैव टू टॉक द सेम थिंग but you have to be presentable. How you're presenting yourself, that is more important. So if I ask,
if someone asks me, tell me something about yourself, I'll talk about my name, I'll talk about my father's name, I'll talk about my mother's name. My father is retired, or my father is like working with a you can say PWD, whatever, at the post of this and that, and my mother is a housewife, and I do have one sibling who is studying. That's it. Now coming to my job experience, I have been working with such and so company from last 8 years or 3 years or 5 years, or if you're still preparing for government examination, so I have completed my schooling from this and that, and at the moment I'm pursuing my, you can say, B.Ed or MBA or whatever. And also they would ask like what are your goals. So yes, now coming over here, what are your goals? This is most important. If, or also, one very common questions while interview that is being asked, where do you see yourself after 5 years? So many people say, or even I had made mistake that after 5 years I'll just see myself, my own brand and this and that. Don't talk something very fancy, right? If you are being asked where do you see after 5 years, talk about the same company. यहाँ पे you can say, हिंदी वर्ड होता है ना चापलूस. So yes, you are. Talk about the same company where you are going for an interview. I'd see myself in the same organization at a better position, or as a manager or anything. But don't say that after 5 years I'll get my own like company running, or I have my own BPO. Try to get yourself engaged with the same company, right? So what I think, this is basic things what I have told about introduction part. Guys, if you have any questions, or if you think that I have missed anything and that needs to be discussed, please leave in the comment section. I would surely go ahead and take the same topic in my next video. And also I'll leave my, you can say, Telegram channel in the description. And also people, if you want like WhatsApp group or anything, please leave in the suggestions and what topics you want to cover next. Or if you want something new, I'll take out like a small session for that. And I'm gradually trying to get like once people join on Telegram, I'll have regular classes. Apart from that, on Sundays or any days which my like you viewers decide, we would go ahead and have a live sessions on YouTube. That would get yourself engaged. The more you talk, the more you interact with people, the better you get in English. Even if you don't know a single word, I can assure you, stick with me. And whether a person is from like a village or Lucknow, Delhi, any XYZ place, I can assure you I'll get that person up to that level that he can easily crack interview. Easily. I'm not talking about your technical part interview. I'm talking about com skills. जो first round होता है, HR round. Because again, technical round and everything depends upon your knowledge, right? So फिर से कहना चाहूँगा आप लोगों को एक बार कि मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. जिसको भी ज्वाइन करना हो, प्लीज़ डू ज्वाइन इफ़ यू फाइंड माई कंटेंट एंड ऑल्सो इफ़ यू फाइंड दैट दिस चैनल वुड बी प्रोडक्टिव फॉर यू. आप प्लीज़ ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को स्प्रेड करें. गांव में हैं तो आप गांव में अगर 8-10 बच्चों का ग्रुप अरेंज कर सकते हैं. मैं फ्री सेशंस दूंगा. अगेन आई एम मेंशनिंग एंड फोकसिंग, फ्री सेशंस दूंगा. ये नहीं कि आज मैंने बोल दिया फ्री, कल को फिर मैं चार्ज करने लूँगा. लेट मी मेक वेरी फ्रैंक एंड क्लियर, दैट वुड बी ऑल फ्री सेशंस. फ्री सेशंस होगा. आप गाँव में हैं, 4-5 बच्चों को ही आप इकट्ठा करो. मैं लाइव सेशंस दे दूंगा. टेलीग्राम पे ज्वाइन कराओ. मैं एक शेड्यूल कर दूंगा कि इस टाइम पे एक दिन या एक दिन छोड़ करके, क्योंकि डेली अगर करूंगा तो यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज योर सेल्फ व्हाट यू हैव लर्न और व्हाट यू हैव डाउट्स. आप जब सुनोगे तो उसको 10 बार वीडियो देखोगे क्या चीज़ मिस किया है. सो फिर आप उसके बारे में नेक्स्ट डे पूछोगे कि अच्छा इसमें ये डाउट था. सो दिस इज़ हाउ वी विल स्टार्ट द थिंग्स.
So thank you so much everyone, and I'll get with my new video and with new topic in next couple of days. Till then, please go through the video, and if you have any doubts, leave in the comment section, and please do join the Telegram channel to get regular updates, and also to get involved into daily classes. Thank you so much people. Thank you so much for like giving so much love to my new channel, because I have just recently we have reached like over 500 views, so that is something a great pleasure for me, and especially thanks to Sachin from, you can say, Basti, that's my native place, or you can say uh, and there are few more people who has helped me a lot, and I hope to Sachin and Jai Prakash and Shivam, all you people, thank you so much for giving a lot of support to me, and hope to see you in next video. Thank you so much. Do take care of yourself and have a great day ahead. Thank you.